हमारे पास there are two kind of waves. कौन कौन सी होती है याद है किसी को? Sir, longitudinal wave and transverse wave. ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूड. तो इन वेव्स में क्या होता है, ट्रांसवर्स में क्रेस्ट और ट्रफ मूव करते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. ठीक है, तो इस तरह से जो साउंड वेव है वो ट्रेवल करती है. कंप्रेशन और साउंड वेव, जैसे अगर यहाँ पे कोई स्पीकर लगाओ तो ये स्पीकर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा इन वेव पार्टिकल के ऊपर. जहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा वहां पे कंप्रेशन होगा, और जहां पे सबसे कम प्रेशर होगा वहां पे रेयरफैक्शन. और जैसे ये मॉलिक्यूल आगे, जैसे अगर हम एक क्यू में लगे हों सारे बच्चे, तो एक को धक्का पड़े तो वो दूसरे में ट्रांसफर होता है, फिर तीसरे में, फिर चौथे में. बाय द सेम मैनर जब कंप्रेशन होता है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं और फिर वो अपनी एनर्जी आगे आगे पास आउट करते हैं. तो इस तरह से जो हमारा ईयर है उसके तक कोई कोई भी जो सिग्नल है वो पहुंचता है, और उस सिग्नल को नर्वस सिस्टम ब्रेन में भेजता है और फिर वो आगे काम. ठीक है, सो मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ इट इज अ वीडियो बेस्ड ऑन सर मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल को मैं पुश पुश करता है. करता हूँ, वो फिर हमारे करते करते ये टकराता है. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही. मैं भी आपको बता रहा हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप बताना कि सर जिसके कैरो में आपके साथ आपको इसकी आवाज आ रही है, Listening to this music right now. ऑडिबल? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. तो इस वीडियो को बड़े अच्छे ध्यान से देखना. पहले मैं ये पूरी की पूरी वीडियो आपके सामने एज इट इज जाएगी. उसके बाद सेकंड टाइम जब मैं इसे दोबारा प्ले करूंगा, सेकंड टाइम प्ले करूंगा, तो मैं इसको बीच में पॉज कर करके आप लोगों को इसका सिस्टम समझाऊंगा. ठीक है, और आपने उसी चीज को अपने वर्डिंग में लिखना है, और हर एक पॉइंट को, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे आपने नोट करना. तो फर्स्ट जो है वो वीडियो आपको एज इट इज ही मूव करेगी. How are you listening to this music right now? Well, you might know that your speakers are creating sound and your ears are listening to it. But there's a lot more going on over here. You see, all your speakers are doing right now is vibrating the particles of the air close to it. Then they vibrate the air molecules close to them, and so on and so forth. And we call this a sound wave. And eventually, when the air molecules close to your ears start vibrating, we hear sound. But how does something as boring as air molecules going back and forth make us experience something like this? Well, for that, we need to look at our ear carefully. I mean the entire structure of the ear. So let's look at how the different parts of the ear work together to make us experience sound. So our ear can be divided into three parts: the outer ear, the middle ear, and the inner ear. The outer ear starts with the pinna. It's the part that you can see and touch, or in my case, the part that my mom would twist quite often. Its job is to collect as much sound waves as possible and channel it into the auditory canal. The sound waves pass through the auditory canal and eventually meet the eardrum, which is shown in green over here. The eardrum is a transparent membrane which is super sensitive to the vibrations of the air. So as the air vibrates, even the eardrum starts vibrating, just like the skin of a drum. And as you can see, the eardrum also separates the outer ear from the middle ear.
This brings us to the middle ear. The middle ear consists of the three tiniest bones of the human body, and they're together called the ossicles. And they have pretty cool names. They're called the malleus, the incus, and stapes. And here's the actual picture of these three bones. And because of their shapes, they're also commonly called as the hammer, the anvil, and the stirrup. Stirrup is where you rest your feet when you're riding your horse. Alright, so as the eardrum vibrates, you can see the ossicles also start vibrating, transferring the vibrations from the eardrums to the inner ear. Now their main job is to increase or amplify the pressure of the sound waves when it reaches the inner ear. But why do we need to increase the pressure of the sound waves? Because as we will see, the inner ear consists of a liquid, not air. So the vibrations must transfer into a liquid. And you might already know that vibrating or moving particles of liquid is much harder than moving particles of air, which is why it's very easy for you to swing your arms in the air, but it's pretty difficult to do that inside water, like say in a swimming pool. And so to set this liquid in vibration, the pressure has to be high enough. And in fact, it turns out that our ossicles increase the pressure of the sound about 20 times. But how do they do that? Well, just take a look at the base of the stapes. It has such a small area compared to that of the eardrum. So when the force gets transmitted from the eardrum to the stapes, it gets concentrated in a very tiny area. And you might know when you concentrate force in a very tiny area, you increase its pressure. And that brings us to the inner ear. The inner ear consists of a bony structure, which is shown in purple. Now, as you can see, the top part of this structure consists of three semicircular rings. They help us in maintaining our balance when walking or dancing or whatever we do. So they're not involved in hearing, so not so important for us. The part that's involved in hearing is this snail-like structure. This is called the cochlea. What does it do? Well, although these bones have already started dancing to the music, nothing gets heard until these vibrations are converted to electricity and sent to our brain. And that's exactly what the cochlea does. Now, the cochlea is super complex, and it's also a little mysterious. Even today, there are certain things about it we just don't know. And so we'll definitely not go into the details. But as mentioned earlier, it contains a liquid. And when the stirrup hits our cochlea, this liquid starts vibrating. And then there are some specialized cells in the cochlea that convert these vibrations into electrical signals. And these electrical signals go through the auditory nerves all the way to your brain, where it gets finally interpreted as sound. And the cells of your cochlea are amazing. The electrical impulses that they generate are super sensitive to how loud the sound is or how feeble the sound is, whether it is high frequency or low frequency. And as a result, your brain can differentiate the tiniest differences in the sound. And so you can understand different letters or words, or even understand what I'm saying right now, or hear the different notes of this music. And so, to summarize, the outer ear collects the sound waves through the pinna and directs them to the eardrums. The three optical bones of the middle ear amplify these sound waves, transferring it into the cochlea, and the cochlea converts the back and forth vibrations of the particles into electrical signals and sends it to our brain. And regardless of how many words I use to describe what's going on, the very fact that the back and forth movement of the air
can be converted into this amazing experience we call sound is truly unfathomable and beyond words. जी शिव, सबसे पहले आप बताइए क्या कह रहे हो? सर जब हम मतलब अच्छे से सुन नहीं पाते, हमारे कान में कुछ प्रॉब्लम होती है, तब वो ईयर ड्रम में प्रॉब्लम होती है। एयर ड्रम जो है वो अच्छे से वाइब्रेट नहीं होगा। और सर जो एक इसमें दिखाया, जो लास्ट पार्ट था उसमें जिसके वो बताते हैं कि वो आवाज को 20x मतलब कर देते हैं, but you have told that in water the sound is more like it is more faster, then why it's need to increase? दोबारा बता अपना क्वेश्चन। Yes, sir. Sir, I'm asking that the third part that they have shown over there, they have told it is full of the liquid or water, and जो to स्टीरअप की enter the बात की थी sound बेटा, over. जो उसने स्टीरअप की बात की थी वो एक हमारा ईयर का केस है, लेकिन जो बाहर हम एम्पलीट्यूड करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, दिस इज ओवरऑल केस, दैट इज फॉर ऑल पीपल। ठीक है, Okay, sir. तो पल्लवी एनी क्वेश्चन? No, sir. तो पल्लवी प्लीज एक्सप्लेन करो इसे, किस तरह से क्या क्या हो रहा था इसमें। Sir, in this, when the sound passes through the ear, it passes through the canal, and in the canal there is a eardrum, and from the देखिए eardrum फर्स्ट पार्ट ऑफ ईयर इज पिन्ना। ठीक है, इट हेल्प्स टू कंसंट्रेट द मैक्सिमम साउंड वेव। दिस मैक्सिमम साउंड वेव पास टू द eardrum via canal। ठीक है, हमने हर एक पार्ट को एक्सप्लेन कर। कैनाल क्या करता है, आउटर ईयर को मिडल ईयर के साथ ज्वाइन करता है। ठीक है, मिडल ईयर में हमारे पास 3 टाइनी बोन्स है, क्या क्या नाम है उनका, क्या नाम था उसका? Sir, can you repeat? जो 3 टाइनी बोन्स थे उनका नाम क्या है? How are you listening to this experience sound? Sir, Osculus or And they ऑस्किलस तो have उनको pretty cool कॉम्बिनेशन names. बोलते हैं ना। They're called the Malleus, the Incus, and Stapes. प्लीज नोट डाउन देयर नेम, मैलस, इनकस एंड स्टेपिस। और इनको कंबाइंड क्या बोलेंगे हम? ऑस्किलस। Oscillus. This is their scientific name and their common name. And here's the actual picture of these three bones: anvil and the stirrup. And their common name are hammer, anvil and stirrup. Written, sir. तो उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट इज
There is a snail-like structure named as Stirrup is where you rest your feet when you're riding your horse. All right. cochlea. So Yes. as the eardrum vibrates, because as we will see, the inner ear goes into a liquid. And you might already know that vibrates harder than moving particles of air, which is why inside water. It turns out that our ossicles increase the pressure of the sound about 20 times. Small areas, it gets increase its pressure. This, the part that's So this is involved all in about hearing is the this. working of uh, What does it do? human ear. So the next one Well, is although these bones have already started dancing to the music, nothing gets. ये आपको क्लियर हो गया सारा? आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो इसे. Yes, sir. वेदांत हो जाएगा ना? Yes, sir. So the next is audible and inaudible. ऑडिबल साउंड्स कौन-कौन सी साउंड होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी लाई करती है फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के. सो जितनी भी साउंड फ्रीक्वेंसीज लाई करेंगी इन बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, दैट साउंड इज नोन एज ऑडिबल. ठीक है. और इनऑडिबल कौन सी होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो लेसर देन 20 और मोर देन 20,000 हर्ट्ज. उसे हम नाम देंगे इनऑडिबल साउंड. मोस्टली हम ऑडिबल साउंड में ही सुन सकते हैं. इनऑडिबल साउंड हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, इसलिए वो हम नहीं सुन सकते, इसे कैप्चर ही हम लोग नहीं करते. So by this manner we have two kind of sound. One is audible and other one is inaudible. Further, inaudible is two type. One is infrasonic and other one is ultrasonic. Infrasonic having frequency less than 20 hertz, or ultrasonic having frequency more than 20 kilohertz. 1K is equal to 1000. So कई जगह पे आपको 20,000 लिखा मिलेगा और कई जगह पे आपको 20K मिलेगा. So both are equal. ठीक है. So this is about the audible and inaudible sound. नोट कर लीजिए सब बच्चे. हाँ जी पल्लवी. Sir, intrasonic, infrasonic or ultrasonic, they are same to inaudible, na? हाँ हाँ. जैसे वो बैट देखे आपने बैट्स. So sir, they are the types of audible or inaudible. इनऑडिबल आप खुद देखो लेस देन और मोर देन है तो आपको सुनाई देगी ये. No sir, तो फिर किसकी टाइप हुई है? they're inaudible.
Written, sir. Music and noise. हाँ जी, क्या डिफरेंस होता है म्यूजिक और नॉइस के बीच? Sir, music is a pleasant sound. And sir, Music. noise is an undisturbed sound. एक्चुअल में क्या होता है म्यूजिक के अंदर एक सिंगल वेव मूव करती है, लेकिन नॉइस के अंदर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की वेव्स जो है वो मूव करती है। जैसे क्लास में टीचर नहीं है और आप सब लोग बच्चों ने शोर डालना शुरू कर दिया, तो वो क्या होगा? नॉइस। ठीक है, बट अगर कोई एक बच्चा क्लास में बोल रहा है या कुछ सुना रहा है, दैट इज म्यूजिक। इन अदर वर्ड्स, इफ Abhijit is there, then it is music, and if Badshah is there, then there is noise. क्योंकि वो कितनी बार कहता है लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। सो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की साउंड जो है वो ओवरलैप करती है और ये नॉइज बन जाती है। और यहाँ पे अभिजीत बेचारा एक ही बार एक ही लाइन गाता है, तो वो म्यूजिक। So this is the difference between music and noise. In case of music, a single frequency works. But in case of noise, there are multiple frequency waves which overlap with each other, and वो क्या हो जाती है, सारी की सारी अनप्लेजेंट हो जाती है। ठीक है, एक और आजकल बड़ा पंजाबी सॉन्ग चल रहा है, डेट इज टल जा टल जा टल जा टल जा, तो वो भी पूरे का पूरा एक तरह का नॉइस ही है। हाँ जी शिवम। सर जिसके कार का हॉर्न होता है उससे भी नॉइज कहते हैं, लेकिन वो तो सिंगल होता है। हाँ, उसको हम क्यों नॉइस बोलते हैं? क्योंकि अगर हम एक कार की बात करें, सबसे पहले कार में क्या होती है? इंजन की साउंड, देन टायर फ्रिक्शन साउंड, उसके बाद जो आप हॉर्न लगा रहे हो उसकी साउंड। तो ये अलग अलग फ्रिक्वेंसीज जब आपस में मैच कर जाएंगी तो वो क्या बनेगा? नॉइज। आपने कई बार Noise. ट्रक्स देखे होंगे ना, बड़े बड़े ट्रक जो हाईवे पे जाते हैं, उन्होंने हॉर्न बड़ा अच्छा लगाया होता है, जैसे टू डू 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 डू, है ना? अगर आप बस में भी जा रहे हो तो उसने भी एक पूरे का पूरा गाना लगाया होता है। ठीक है, यस सर। दैट इज म्यूजिक और अदरवाइज इज साउंड। हाँ जी वेदांत, क्या कह रहे हो आप चुप चुप के? नहीं सर, मैं कुछ नहीं। So this is the main difference between music and sound. Music is pleasant, जैसे वो कहते हैं आ भी जा, और दूसरी साइड बादशाह, लड़की पागल है, पागल है, पागल है। So it is noise, different frequency, overlapping, and single frequency is music. अब आपने अपने एनसीईआरटी ओपन करनी है और एनसीईआरटी में से दो चीजें आपने नोट करनी है। वन इज हाउ टू लिमिटाइज, हम इसको लिमिटाइज कैसे कर सकते हैं, नॉइस को कैसे कर सकते हैं? बाय प्लांटिंग ट्रीज। ट्रीज क्या करते हैं? साउंड को अब्सॉर्ब कर लेते हैं चीजों से। लेस हॉर्न यूज करके, ट्रैफिक कंट्रोल करके, इन सब चीजों से। और इसके इल इफेक्ट्स क्या क्या है, क्या साइड इफेक्ट्स क्या है इनके? एंजाइटी हो जाती है बंदे को, नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसको इम्पेयरमेंट, हेयरिंग इम्पेयर हो सकता है वो, ये सारी की सारी चीजें। और सम टाइम कार्डियो अरेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, एंजाइटी होती है, बीपी चेंज होता है, बीपी चेंज होने से कार्डियो अरेस्ट।
तो सिर्फ आपके लिए एक छोटा सा काम है, आज आप लोगों ने उसे अपलोड करके मुझे भेजना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, ये आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, लेकिन जो जो चीजें हमने वीडियो में यूज की है वो सारी की सारी आप उसमें एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे पास आएगा पिन्ना, पिन्ना के बाद आएगी ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल के बाद 3 बोन्स, उनके साइंटिफिक नेम प्लस कॉमन नेम, ठीक है। देन जो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉक्लिया, ठीक है। और इसकी सारी की सारी आपने वर्किंग एक्सप्लेन। देन सर जो सेकंड, ऑसिलस का जो कंबाइंड नेम है ना वो 3 हाँ बोन्स इन तीनों का कंबाइंड है, और इन दोनों सर का इस वैसे नाम आंसर पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है कि पॉइंट्स में? जैसे आपको ठीक लगता है। फिजिक्स में ओके ऐसा सर कुछ स्नेल स्ट्रक्चर बोन का फिजिक्स में किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं होती कि आप पॉइंट्स बना के लिख रहे हो या पैराग्राफ में लिख रहे हो। हमें फिजिक्स में क्या चीज चाहिए, लॉजिक। चाहे ओके आप वो सर। एक सिंगल 1 वर्ड में कंप्लीट कर दो, ठीक है, चाहे आप उसके पीछे पूरी की पूरी स्टोरी लिख दो, मार्क्स सेम ही मिले, ठीक है। ओके सर। ये कोई थर्स्टी क्रो का ऐसे नहीं है कि हमने लिखना है पहले क्रो ईस्ट की तरफ गया, फिर वो वेस्ट की तरफ गया, फिर नॉर्थ की तरफ गया, फिर साउथ की तरफ गया, जब उसे कहीं भी पानी नहीं मिला और वो पेड़ उसी पेड़ के नीचे पेड़ पे बैठ गया, तो उसने नीचे देखा तो वहां पे एक घड़ा पड़ा, ठीक है। तो लंबा कुछ नहीं, लॉजिक होना चाहिए। अब इस थर्स्टी क्रो के पीछे भी देखो लॉजिक है, उसने अगर वहां पे बर्तन था उसमें उसके अंदर पत्थर डाले, तो हम लोगों को पता है कि जो भी स्टोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते करते हैं ना, ठीक है। यस तो सर। अगर उसने उसके अंदर पेबल्स डाले तो वो पेबल्स तो पानी को अब्सॉर्ब कर लेंगे, पानी तो बचा ही नहीं, तो उसने पिया क्या फिर। वो क्रो थर्स्टी क्रो नहीं, फुलिश क्रो था, उसे इतना ही नहीं पता। गॉट इट। सो हर एक चीज के पीछे लॉजिक होना चाहिए। जैसे आपने वो एक स्टोरी सुनी होगी, लॉयन एंड रैबिट की, सुनिए ना। यस वो कहता है कि तू लेट क्यों गया, कहता है मुझे रास्ते में एक और लॉयन मिल गया था। वो कहता है कहाँ पे लॉयन, वो कहता है देखो ये देखो, वो अपनी शैडो देखता है और बीच में जंप लगा देता है, फिर वो लॉयन मर जाता है। अब जब ये लॉयन मर जाता है तो इस जो पानी था इस वेल का, वो तो पोल्यूटेड हो गया, है ना, क्योंकि उसके अंदर एक जानवर बड़ा मरा पड़ा हुआ है। अब इस पोल्यूटेड वाटर को जितने भी एनिमल्स पिएंगे वो भी सारे क्या होंगे, बेचारे बीमार हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। तो यहाँ पे लॉजिक कहाँ पे है, कोई भी लॉजिक है, कोई लॉजिक। तो नो सर। हमें सिर्फ नो लॉजिक, सर। आप जैसे मर्जी से कंपाइल कर सकते हो, इट डजंट। और द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू लिमिटाइज, कैसे हमने लिमिटाइज करना है नॉइस पोल्यूशन को, ठीक है। एंड थर्ड वन इज इल इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। ये 3 क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने इन्हें तीनों को एक्सप्लेन करके मुझे पोर्टल के ऊपर अपलोड कर। सर सेकंड क्वेश्चन क्या है? today we have to do 3 questions. हाँ जी, हाँ जी, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन इज इल इफेक्ट और साइड इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। और थर्ड क्वेश्चन क्या था, हाउ टू लिमिटाइज नॉइस पोल्यूशन। Noise. शिवम आपके लिए मेरे पास एक काम है छोटा सा, करोगे? यस सर। एक आपने पीपीटी बनानी है ऑन द वर्किंग ऑफ, नहीं, हाउ साउंड प्रोड्यूस इन ह्यूमन। पीपीटी बनाओगे आप इसके ऊपर, चाहे इसमें आप कोई मूवी ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर दो,
कल आप इसे एक्सप्लेन करो। सर कल ही? हाँ जी, कल ही है ना Okay, sir. हमारी क्लास, यस सर। ठीक है। कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कल आपको शिवम पढ़ाएगा। तो आप सब अपने क्वेश्चंस रेडी रखना, शिवम के ऊपर बम्बार्ड करवाना, हमने हमला Okay, sir. तो अच्छे से शिवम आपने प्रिपेयर करना है ये टॉपिक, ओके सर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आप लोगों को सारे टर्म्स क्लियर होगी होंगी आज की। थैंक यू वेरी मच, Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग।